So no points for guessing where I am. आज का दिन शुरू होता है at the Singapore Zoo and the place is really nice and quiet today. आज ज़्यादा रश नहीं दिख रहा तो like we're gonna enjoy here. और टिकट्स हमारे पहले ही बुक थे थ्रू अ ट्रैवल एजेंट. अगर आप यहाँ पर आके टिकट्स लोगे तो इट कॉस्ट अराउंड 35 सिंगापुर डॉलर्स. और हमने जस्ट एंटर किया है एंड दीज आर द सीन्स. वो check out the crocodile through. Wow! It looks like the crocodile is eaten so much that his tummy has become fat. You can already see the place is so huge and it's almost like a safari. एकदम open सा है, कुछ ऐसे close नहीं है. You could hear the monkeys coming from there. यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई किसी को cage में रखा है या ऐसा कुछ, सारा कुछ open सा है. So like that is so beautiful. Similar to most attractions in Singapore, even the zoo is divided into many themes. और जो पहला अट्रैक्शन हमें देखने मिला था वो था दिस लैंड ऑफ मिस्टिकल बीइंग्स. तो यहाँ सिंगापुर जू में काफी ज्यादा शोज होते हैं एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स. और जो पहला शो अब हम देखने जा रहे हैं वो है द स्प्लैश शो एंड इट फीचर्स अ सी लायन. So right now we are going to see one of the biggest and the most beautiful creatures, जो कि है the white tiger. And just like the white tiger, यहाँ बहुत सारे animals हमने देखे. Orangutans, various monkeys, penguins, turtles, lizards, Komodo dragons, meerkats, zebras, giraffes, kangaroos. So right now I'm going into the Australian section, जहाँ पर मैं kangaroos देखने वाला हूँ. There are I think two types of kangaroos. One is a field kangaroo and another one is a tree kangaroo. So let's see. एंड कहते हैं कि ये ट्री कैंगरूज यहाँ पर स्पेसिफिकली लाए गए हैं ताकि वो मेट करे और उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो. यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंगरूज एक छलांग 7 मीटर्स तक लगा सकते हैं. वेल मुझे भी ट्राई करना है. Also at the Singapore Zoo, you'll see tons of dangerous animals like the lions, cheetahs, leopards, the ever dangerous man, rhinos, hippos, elephants, ostriches, and a lot of bird species as well. थोड़ा creepy लग रहा है. Actually, it's not so crowded today. आज इतना ज़्यादा रश भी नहीं है यहाँ पर. और पूरा जू ऐसे एक जंगल की तरह है. आपको कब कहाँ क्या दिख जाए ना उसका कोई आइडिया नहीं है. जैसे ये lizards, peacocks, monkeys. So most of the zoo हमने cover कर लिया है and we are moving to this section called as a river safari. River safari is more like a small segment attached to the Singapore Zoo. यहाँ पर mostly you'll see fishes and creatures that are found in most of the various rivers of the world. But इस section में एक बहुत ज़्यादा special creature है जो कि मेरा बहुत बड़ा favorite है. And that is the panda जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा. Okay, so we are inside this zone and the temperature over here is kept down, I think to suit the pandas. Oh, okay. Thank you. Sorry. So we have to be quiet because this is a very quiet zone. Giant pandas are solitary animals. They only come together once a year to mate. After that, they will live their own lives. So there are two pandas over here, one a male one and one a female one over here. So female है ना उतनी shy सी है and they say कि they meet only once a year जब they are coming to mate. After that the pandas generally spend an isolated life. But हमने मूवी जैसे कुंग फू पांडा उसमें देखा है कि उनकी तो पूरी विलेज साथ में रहती है. But actually that's not the case. The guy over here told me they live a very isolated life away from each other. सिर्फ साल में एक बार मिलते हैं mating के वक्त. And the female panda is over there. I can just see the wait. It's over there.
And another good place to visit here in Singapore, and especially if you are with children, is the Jurong Bird Park. ये भी एकदम similar है to the Singapore Zoo and the River Safari. सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये concentrate करता है completely on birds. So the majority of bird species over here are in open spaces, but some of them, the very special ones, are kept in cages as well. I have never seen a vulture ekdam up close, so this is the first time. And this section over here is called the birds of prey, and they have the vultures in here. And यहाँ हर सुबह एक शो होता है द किंग्स ऑफ द स्काईज, जहाँ पर ये प्रेडेटर्स वेरियस स्टंट्स करते हैं. And most of these birds over here were actually found injured, but now are rescued and treated back to full health at their own in-house hospital, which is like amazing. So here there is a section called the lorry loft, where you can actually go inside and feed the birds. There are parrots and all. तो काफ़ी interesting है, मैंने काफ़ी सुना है इसके बारे में. Let's go inside and check it out. Wow. See that blue one. Oh! It just came on its own. Dhruv! See, now he's my friend. Hi! यहाँ एक और सेक्शन है जहाँ बर्ड्स जो है डायरेक्टली डिसेंडेंट्स हैं डायनासोर्स के, एंड देखने में काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है. किसको याद है जुरासिक पार्क का फर्स्ट सीन? बस एकदम सेम फील्स आ रही है मुझे यार. See how beautiful this place is. यहाँ कोई आया नहीं अभी तक, but wow. This is quite a sight over here. क्या मस्त waterfall है. This is inside the Jurong Bird Park itself. So I don't think many have noticed this so far. Like there are very few people here. ज़्यादा लोग ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, but this is actually very beautiful. Like the moment you come here, आप बस फोटो ही लेते जाओगे यहाँ पर. Honestly, I don't feel like leaving this place. It's so amazing, and you can just sit there for hours watching the waterfall. But somehow it completes our trip here at the Jurong Bird Park. अगर आप अपना ट्रिप और टाइम सही से मैनेज करते हो तो आप ये दोनों जगह, सिंगापुर जू एंड बर्ड पार्क, एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हो. बट आई से डोंट मिस दिस एक्सपीरियंस. आपको बहुत कम ऐसे मौके मिलेंगे टू सी ऑल दीज ब्यूटीफुल क्रीचर्स ऑफ द वाइल्ड सो अप क्लोज. आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, एंड अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. दिस इज मी नवीन साइनिंग आउट. आई विल कैच यू गाइस ऑन द नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून. सी या. जब आप ब्लॉगिंग करते हो तो शॉर्ट से ही लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, देख लो बिहाइंड द सीन्स.